बच्चन साहब ने एक कविता कही थी, अड़े रहो, तो उस पर मैंने कहा था कि सागर की लहरें जैसी हों, बस विश्वास पे अपने बढ़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। दूसरी बात यह है कि हमारे पास एक $500 बिलियन की वेडिंग इकोनॉमी हो जाएगी 2030 तक। मैं इवेंट इंडस्ट्री से सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप अगर कुछ आप जिंदगी में पाना चाहते हैं तो सुनिए। आज हमारा एक बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ कि इंडस्ट्री के बड़े सवाल क्या हैं। तो टैलेंट एक बहुत बड़ा सवाल है। अगला टैलेंट कहाँ से आएगा? लोगों क्लाइंट्स का पेमेंट टाइम से नहीं आता, उसके बारे में बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ। In the last 6-7 years, things have changed completely. The leader of our nation is himself the biggest event manager of the country, and so there is a lot of the same ethos that has now percolated down the system. और आप देख ही रहे हो that now the largest events that happen in the country are events that are hosted by either the central government or by state government. And as far as Imagine is concerned, यार ये हमारे साल का एक मक्का और मदीना है, जहां हम सब अपनी बाकी परेशानियां छोड़कर दोस्तों यारों के साथ यहाँ इकट्ठा होते हैं। We are planning to host the FIFA World Cup Women's Football, that is under 17, and next year in January we are hosting the World Cup Hockey. And also besides that, there are a lot of internationally famous Konark Dance Festival and like that Bird Festival and various events. Can I request Dhoni Baji on the stage? Dhoni Baji on the stage. Bharat, Vinay on the stage. Farhan. Bringing together the entire ecosystem, event managers, suppliers, vendor partners, hotels, artists, employees, all of them as part of one big. I think Imagine वो जो बोला जा रहा है ना, महाकुंभ ऑफ एक्सपीरियंशियल इंडस्ट्री, आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज। और ईमा स्टार्ट एक जुनून के साथ हुई थी आज से 13 साल पहले, तो एक जर्नी है और आज एक पग बाय पग से स्टार्ट हुए थे, धीरे धीरे कारवा बना और अब एक बहुत बड़ा जलूस बनता जा रहा है। Cheers to IMA. We look forward to many more years of IMA growing and IMA rocks always. So cheers to IMA. All the best, guys. Keep it up. Keep up the great work. Loving so far and IMA rocks. Cheers to IMA. Long live all of us. Cheers to IMA and cheers to Imagine. Thank you, IMA. Thank you, Imagine. It's always a pleasure to be here. आपने अपनी ज़िंदगी में इवेंट्स तो बहुत देखे होंगे, और इवेंट एक नहीं बहुत तरह के इवेंट देखे होंगे, चाहे वो स्पोर्टिंग इवेंट है, चाहे वो एक वेडिंग है, कॉन्सर्ट है, एग्जीबिशन है, कॉन्फ्रेंस है, होते तो सब इवेंट्स ही हैं। आज हम आए हुए हैं एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे इवेंट को अटेंड करने जिसे जाना चाहता है इवेंट इंडस्ट्री के महाकुंभ के रूप में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इमेजिन 2022 की, और आज मैं हूँ फेयरमाउंट होटल जयपुर में, जहाँ पे ईमा इवेंट एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन इमेजिन को होस्ट कर रही है, जो कि इनका एनुअल इवेंट है। इस इवेंट के अंदर आपको मिलेंगे देश भर से ज़बरदस्त इवेंट मैनेजर्स, इवेंट एजेंसीज, बड़ी छोटी, देश के हर कोने से आई हुई हैं, और हम उनसे जानेंगे कि इवेंट बिजनेस में, इवेंट इंडस्ट्री में क्या नए ट्रेंड्स हैं, क्या चल रहा है, और ये इंडस्ट्री ख़ास तौर पे पोस्ट कोविड इरा में किस तरह से उभर के आ रही है, किस तरह से बाउंस बैक कर रही है, और आने वाले टाइम में इनकी क्या स्ट्रेटजीज रहने वाली है। आइए मेरे साथ, मैं आपको लेके चलता हूँ इमेजिन 2022 में। लेट द फन बिगिन। सर नमस्ते, वेलकम टू फेयरमाउंट जयपुर, वेलकम। आप जानते हैं कि शेर को जंगल का एपेक्स प्रीडेटर कहा जाता है, और वो इसलिए क्योंकि अगर जंगल में शेर ना हो तो कहीं ना कहीं वो जंगल अधूरा होता है। इसी तरह से अगर हमारी इकॉनमी के बीच में से इवेंट इंडस्ट्री हटा दी जाए तो हमारी इकॉनमी अधूरी रहेगी। इसीलिए आज हम इस इवेंट में आए हैं।
stakeholders, etc., was an understanding about the kind of revenue that is coming in through large format events into the country, an understanding of how it is being used for nation building. We do know that there are some global summits that may be coming soon to our country. It's actually great that over the last 7-9 years, there are considerable amount of event opportunities that are coming out of various government offices. And incredibly, the scale and size of events has also grown. There was a time in the 2013, 2015 time, the amount of or the ticket size of the event used to be 50 lakhs or a crore. Now it has gone to 10 crores, 15 crores and 20 crores of rupees. While we are extremely keen to partake in all of these opportunities and make sure that we collectively are able to become a part of the India story, we get stuck on account of financial issues. Hi, my name is Bhanu Ahuja and my company is called Entertainment Management and Promotional Consultants. I'm based out of Ludhiana, Punjab. IMA is a family and it's great to be here at Jaipur for the Imagine, and we look forward to having a great time. Cheers. Hello everyone, I'm Ricky Cage. I'm a musician and I'm here at Imagine, and it's such an amazing event with events companies, vendors, basically people who bring entertainment to the masses, people who create beautiful experiences are all coming together from across India. And I got the opportunity to perform over here, perform my music from my Grammy-winning albums. And I'm just exhilarated after this performance and meeting all these wonderful people. So for me, why Imagine is so important is that I believe that all these events companies can come together and figure out how to make events more and more sustainable and more environmental friendly, reducing carbon footprint. And this can only happen if the entire events fraternity comes together and shares solutions, shares ideas. Hi, this is Mutrika Dhoka, Director, Chandra Events. IMA is all about coming together, and I truly believe together we can achieve so much more. It's amazing to be at Imagine because this is the mecca of our industry. Anyone who has anything to do with events and entertainment needs to be here, and it's a great learning platform for all of us, and also a platform where we can see what's going on in the industry, what are the best case practices, talk to people, meet people. It's been 2 years that this event has not happened, so it's amazing to be here and to see people in person while we have met them and spoken with them and worked with them on Zoom. But it's amazing and it's thrilling to meet them and talk to them. So it's an amazing feeling, and it's amazing to see so many people who have come at this conference. It's one of the biggest conferences that has happened in the entertainment in the events industry, and we can find all the stakeholders here, right from organizers to conceptualizers to anyone and anyone who has anything to do with events. So it's great to be here. I'm Prerna Saxena, Vice President, North IMA. A lot of people ask me, what is IMA? I say IMA एक ख्याल है, एक ख्वाब है, जो कि हमने एक सपना है, जो हमने सब इवेंट मैनेजर्स ने साथ में देखा है अपनी इंडस्ट्री को चेंज करने के लिए. Hi, I'm Mahavir Sharma. I represent India's largest B2C show, Jaipur Jewelry Show, and also Swishin Events LLP, which is into corporate events, weddings, and exhibitions. I think IMA or a national body like IMA is absolutely a glue to a country's tourism, events, exhibitions, promotion, branding, etc., etc. And I think we need to collectively work, which we are. And I think I'm happy to be here. And I'm pretty sure that collectively, together, we can create an industry. Hi, I'm Reema Ghoshal, a senior executive producer with Teamwork Arts, and this is my first Imagine experience. What a fantastic initiative this is. Lovely to see so many people from across the country come together for this conference. Roshan just spoke about collaboration versus competition, and it's lovely to see how both these terminologies are coming together in real life. Hi, I'm Martin Da Costa. I'm the CEO and founder of the 70 Event Media Group. I'm here at IMA, Imagine, and it's the gathering of all of us from the industry. We have a lot of fun, of course, but we learn a lot as well about each other, about the industry, about the business. So hi, I'm Shrishti. I'm from VS Studio. We're a wedding photography company back in Calcutta. This is my first time at Imagine. I was really looking forward to attending and meeting such important delegates of our industry, and it's been a great pleasure so far. Being a part of IMA for around about 9 years, it's a
crazy group of audience, and it's like amazing to meet all the friends. Thank you. Today's event is actually the path-breaking one, and I've taken a stall over here, by the way. So I really appreciate the setup and all everything. अब मैं बड़ी खुशी हुई कि मैं इस इवेंट का पार्ट बन के और बजाने जो इवेंट कंपनी चलाते हैं वो लोग मिलने का मौका मिला, और मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरा नाम नाथुलाल सोलंकी है, नगाड़ा वादक पुष्कर से। How do you feel to be here? Yeah, excellent. Excellent. We are from Tamil Nadu. Our company name is Rice Advertising Private Limited. We are doing advertising and even management. This is the first time I come here. It's a very interesting and very useful to us. It's an opportunity to meet everyone and from various states and. Hi, this is Sri Sailam from Rice Advertising Private Limited, EC member of South IMA. Very happy to be here. Imagine always networking, good relationship with event managers all over India. If anybody missing Imagine, try to come next year. Thank you. Hi, I'm Shweta Kumar from Institute of Event Management. So my feeling is awesome. बहुत ही अच्छा लग रहा है हम मुझको यहाँ पे, एंड ये एक बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं जब लोगों ने पूछा कि ईमा और इमेजिन क्या है, तो जस्ट मेरा यही था कि फिल्म इंडस्ट्री में जैसे जस्ट लाइक आईफा, तो इवेंट इंडस्ट्री में इज लाइक ईमा इमेजिन। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और साथ में ये पिछले 3 सालों बाद हो रहा है, तो इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, और इतने सालों बाद हम सबसे मिल रहे हैं। This is Muhammad Ali from Makar. Till now, I can say it's so power packed. I'm so amazed to get the informations and the kind of discussion what we had. So knowledgeable. I think it is so encouraging, both from the partners and then from the governments. So I think if we collaborate more, I think we have to do a lot we can do together. It's amazing to be here for this conference, EMA conference, and there's lots to learn. So I love Imagine. Imagine is a passion project for IMA. I've been at all Imagines for the last 14 years, 15 years. I think year on year it just grows bigger. The kind of knowledge sharing that is there grows faster. I think it's an opportunity to meet a lot of old friends who come across from all over the country. And we look forward for more editions as we move along. एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म किया है, नॉट जस्ट टूरिज्म, इवन इवेंट, वेडिंग, हर तरह की उसको केटर करते हुए दे हैव कम अप विद अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म। एंड सबसे अच्छी बात मुझे इसमें लगती है कि देयर इज अ क्वालिटी विच इज़ बीइंग केटर्ड टू। ऐसा नहीं है दैट यू नो कुछ भी और सिर्फ एक गैदर करने के लिए इवेंट किया गया है। क्वालिटी पर्पस से जिस तरह से इसको क्रिएट किया गया है, it is quite a wonderful platform. We think it's a very enriching experience. You see people from all over sharing their experiences, putting up their skills. So it's wonderful as a platform, and it should be done more often. And the best part is that you're meeting all your industry friends, and the get-together last night was crazy fun. We saw all our 4 presidents, ex-presidents now on stage doing that crazy ensemble. And a lot of learning, a lot of interaction with industry, peers, friends, vendors, associates. We've got the big people from our industry here. So wherever they are, it's always good to be around them, because we have a lot of learnings. Imagine to me is everything that we can imagine for the industry to grow, for the industry to excel, to move ahead leaps and bounds together with people who belong to it, with stakeholders, with our members, with people who work as supply chains, with our employees, with teams, the whole ecosystem. And I'm happy to be here. I'm a part of the organizing team, being in the NEC, of course. And it's an emotional moment for all of us, because this one is happening after 2 years. I think it's amazing. I think it's amazing to finally meet, all our industry peers and all our friends and colleagues from the industry in person, physically, on ground after like 3 years. So I think it's been a fabulous experience. I think that's what Imagine really does. Gets all of us closer, gets all of us connected. How does it feel to be at Imagine event? A few lines for Imagine event. It's brilliant to be back with the fraternity and meeting people again. It's been a long time, and it's nice to catch up with all our industry friends. So what do you have to say about Imagine? Awesome. As always, meeting people. I think EMA is all about giving and learning. Previously, we used to learn from our stalwarts and seniors, and now we are just learning from the youngsters. And
Hail HEMA, hail Imagine. इमेजिन इज लाइक जो हमारे अंदर एनर्जी भर देता है। जब भी हम इमेजिन में आते हैं तो इंडस्ट्री में एक मोटिवेशन मिलता है, एक एनर्जी मिलती है। Sir, just few lines for Imagine Event. How does it feel to be here at Imagine Event? It feels really fantastic. The kind of camaraderie it's there, the kind of bonding we all event managers get together and have. It's really fantastic. One line message for the Imagine Event. It's been more than 8 years. We keep coming back and we'll keep coming back. Cheers to Imagine. Imagine 2022 is witnessing all the brilliant minds put together. So of course the ones who conceptualize, who execute and who make the best possible things possible for the public, the corporates and everything. They actually put together brilliant ideas and they make beautiful things happen. So I think this is the right platform. Hi, my name is Rajiv Kapoor. I'm the General Manager at Fairmont Jaipur. You know, at Fairmont, we believe turning moments into memories. Everybody during the COVID times have been sitting at home. There were a lot of hybrid weddings and different events going on. Now is the right time, post-COVID, where we're bringing all the families, friends, event partners, everybody back to Fairmont, which is a Mecca of weddings in India for destination weddings, so that we can send that positive energy out to everybody throughout India and outside, that here this event industry and Fairmont Jaipur is ready to welcome a lot of wedding guests from throughout the world and throughout India. So I'm so happy and proud with my team to bring all guests to Fairmont Jaipur. So बात करें अगर हम वेडिंग इंडस्ट्री की और इस इंडस्ट्री में आने वाले टाइम में कितना स्कोप है, तो क्या कहेंगे आप? वेडिंग इंडस्ट्री की बात आप कीजिए, हिंदुस्तान में वेडिंग्स कभी रुक नहीं सकती है। पिछले आप 100 सालों का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 20 सालों का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, वेडिंग्स कभी ना रुकी है ना रुकेगी। कोविड के अंदर सारी इंडस्ट्रियाँ नीचे गिरी थी, वेडिंग इंडस्ट्री कभी भी नीचे नहीं गिरी है। ये इंडस्ट्री तो आगे जाएगी और बढ़ती जाएगी। डेफिनेटली कोविड ने एक बात सिखा दी है कि ज़्यादा पैसा जोड़ के फ़ायदा नहीं है, और हिंदुस्तान के मारवाड़ियों का और बिजनेसमैन का पैसा दो ही जगह निकलता है, एक इंटीरियर्स में और एक शादी के अंदर। तो शादियां तो बहुत बड़ी होती जा रही है और शादियां और बड़ी होती जाएगी। आप देख रहे हैं होटल इंडस्ट्री इतना पैसा कमा रही है, जो होटल की रेटें हो गई 1 लाख रुपए का कमरा उदय विलास का, 80,000 रुपये का कमरा लीलास के, इस तरह की प्राइजेस हो चुके हैं। तो वेडिंग्स बहुत आगे जाने वाली है और वेडिंग्स बड़ी होंगी, अब इससे छोटी नहीं होंगी जो होती है। इट्स द फ्लरिशिंग टाइम ऑफ द इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री, इट इज़ द फ्लरिशिंग टाइम ऑफ द सोशल बिजनेस। बात करें हम इस इवेंट की और आपके साथ ईमा की जो एसोसिएशन है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ मेमोरीज आप देखते हैं कभी, किस तरह से आप देखिए जी, ईमा इट इज़ अ प्रिविलेज एंड आई एम वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ईमा। और ईमा स्टार्ट एक जुनून के साथ हुई थी आज से 13 साल पहले। तो एक जर्नी है और आज एक पग बाय पग से स्टार्ट हुए थे, धीरे धीरे कारवा बना और अब एक बहुत बड़ा जलूस बनता जा रहा है। मैं अपील करूंगा हर हिंदुस्तान के इवेंट मैनेजर से, हर स्टेट के इवेंट मैनेजर से, दिस इज द ओनली सेंट्रलाइज्ड बॉडी ऑफ इंडियन इवेंट इंडस्ट्री एंड वेडिंग इंडस्ट्री। प्लीज कम एंड जॉइन इट। हम अकेले चलेंगे तो कुछ भी नहीं बनेंगे, और अगर हम साथ मिलके चाहे गवर्नमेंट के पास जाएंगे, चाहे होटल के पास जाएंगे, चाहे किसी भी बॉडी के पास जाएंगे, तो हम टैक्सेशन में बेनिफिट करवा सकते हैं, हम लैंड्स ले सकते हैं, हम प्रॉपर्टीज डेवलप करवा सकते हैं। आई एम सिद्धार्थ चतुर्वेदी, आई एम द जनरल सेक्रेटरी फॉर ईमा, एंड it's this convention is happening in my hometown based out of Jaipur, so yeah, host of the convention also. To highlight 2-3 points what Imagine means to you, what would they be? I think Imagine वो जो बोला जा रहा है ना, महाकुंभ of experiential industry, I think that's what it is. It is you know, ideas converging, and at this point of time we really needed it, because you know what situation we've been through in COVID, and post-COVID also, you know, everyone has to realign, readjust, reboot, refine the whole, you know, scenario, and you know, so it was important, and it's important that everyone is here discussing, deliberating. I think we're you know, we're almost restarting the industry somewhere or the other, you know, and that's where this whole meeting of all minds is all important, and people are talking, discussing the way forward. So as the former president of IMA, what are your comments on this journey, glorious journey of IMA over the years? I think it's been an awesome journey, where
from a small organization of just 20 and 30 people. This is transformed into an entire industry, bringing together the entire ecosystem, event managers, suppliers, vendor partners, hotels, artists, employees, all of them as part of one big. The last 2 years have been very tough for the face-to-face event industry. What are your comments on the resumption of events, and what are the upcoming trends that we can see in the coming times? I think the last 2.5 years have been challenging for the face-to-face industry, the physical industry. In this time, we became a digital industry where you connected with each other, did events and meetings digitally on digital platforms. The new industry that you're facing today or with today is a phygital industry, wherein physical, digital have come together as one. Now, whether you say you're physical or whether you're digital mainly, that'll keep varying. You'll get different formats, different possibilities over the years. The reality is this, that this industry is challenged and has been challenged the most during COVID, but this industry is poised for its greatest growth after COVID, even larger, faster than before COVID. So I'm very gung-ho about the industry. I'm very positive about the industry. I think, look at it like this. Previously, we had a venue that accommodated 300 people. How many people can you go with for your event? Maximum 400, minimum 200. Now, you can take that venue of 300 and explode it and multiply it to 3,000, 30,000, 3 million, whatever you want. Absolutely. So you can connect the world to what you're doing. So there's an explosion of that. There's a extrapolation, the reduction of costs. There's sometimes an increase of cost because of what you're doing. And the creativity and possibilities of getting talent and performances from across the world or speakers from across the world has become easier with phygital. So the industry has evolved, has got transformed, but it's actually poised for its greatest phase of growth. Hi, I'm Sanjoy Roy, the past president of IMA. It's absolutely wonderful to be back here again in person and live. I think the most important thing about IMA is the fact that people from the industry can come together, new, old, not so new, and share their stories of success, of failure, of trials and tribulations, because from this, each of us can learn, each of us can be inspired to be able to cross over and do so much more. So congratulations, and look forward to this industry doing even better in the coming years. Okay, I am Major Kamaljeet Singh Gurna. I am the Managing Director of Bellset Entertainment, and I am currently the Treasurer of IMA for last 4 years. I would say the post-pandemic, the industry is bouncing back, the business is up, and we are going to continue to witness this, and I'm sure the business is going to flourish. And Imagine is the festival of event managers. This is where the industry comes together, celebrates the work that it has done. And I think there's no better platform than Imagine for event managers. Hello, this is Rituraj Khanna from Q Events. We are based out of Noida, and I'm the CEO of the company. So I'm basically into decor, but I travel a lot. I travel 10 months a year. So COVID had set up a little back, but we are now back in full form. So IMA is the oldest body of events we have, and one place where you get to meet everybody of our fraternity, everybody close to us who've been here over the years. See, now COVID has gone past, everybody's coming back. People who had shut their shops, I think we should pull them back now. I have taken about 32 children out of their shell to come back to work now. So I think we all should be part of that. It should be agenda now. So friends, I am very fortunate because now I am sitting with Mr. Biswajit Roytre, who is the Joint Director, Odisha Tourism. Can you tell me what does Odisha has to offer for the tourism industry and especially for the event industry? Frankly speaking, Odisha is now marching ahead in a very aggressive way in promoting our tourism products. And Odisha, we have a logo that India's best kept secret. So actually every year we are planning in a very different way to attract more and more tourists, and also we are getting very good results. Odisha is a state which is very fortunate to have a very long coastline of 482 kilometers
We have very beautiful beaches, and also Odisha is famous for its monuments. We have the famous World Heritage Site like the Konark Temple, which is a 13th century temple, and we have the famous Jagannath Temple at Puri, which is one of the dhamas. And there are a lot of hundreds of temples and monuments. And besides that, Odisha is also famous for its wildlife. We have recently been able to add one more Ramsar site. So there are two Ramsar sites. One is Vitarkanika, that is a national park, and another is Hatkosia, that is also a very beautiful place. And besides that, Odisha is also famous for its culture, for festivals, for cuisine, and there is lot of things to offer. And for the event perspective, we can say that lot of events will be taking place in this winter. We are planning to host the FIFA World Cup women's football, that is under 17, and next year in January we are hosting the World Cup hockey. And also besides that, there are a lot of internationally famous Konark Dance Festival, and like that bird festival and various events. Amazing, amazing. And sir, could you also tell me, we are here at the Imagine event. So how do you feel? What are your comments about this event? Actually, we are first time participating in this event, and it is a learning experience. And yesterday also our director sir was here, and he was in the panel discussion. And this will definitely help us in future. And I hope the event managers and the event companies, they will also get lot of scope in Odisha. Namaskar, my name is Samit Garg and I am the Executive Vice President of EMA. I represent an enterprise called eFactor Experiences Limited. We have been in the business of curating live experiences across different realms of the events and the impresario business for about 22 years now. तो हम प्राइवेट सोशल इवेंट्स भी करते हैं, हम गवर्नमेंट इवेंट्स भी करते हैं, हम फेस्टिवल्स भी करते हैं और थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स और टेलीविजन भी करते हैं. To understand from you the significance of EMA for the event industry in India, and what's the role of Imagine in this space? See, the significance and importance of EMA is very simple. Any industry requires an association, because that needs to be one platform where all of you collectively get together and discuss policies and other things which relate to the overall development and progression of the business. आप कोई भी प्रकार का बिजनेस उठा लो, उसकी ट्रेड बॉडीज और एसोसिएशंस बनी हुई हैं, उसीलिए EMA भी बनी है. So the objective of EMA is to get together, make sure that all the relevant people from the industry come, they sit and they talk and they discuss and they try and find solutions, and then collectively are able to represent the industry or the business to a state government or any other central government body. Like any other industry association, that is the objective. And as far as Imagine is concerned, यार ये हमारे साल का एक मक्का और मदीना है, जहाँ हम सब अपनी बाकी परेशानियाँ छोड़कर दोस्तों यारों के साथ यहाँ इकट्ठा होते हैं. उसमें हम पार्टी भी करते हैं, एक दूसरे की खिंचाई भी करते हैं, नॉलेज भी शेयर करते हैं, थोड़ी सी ज्ञान की बातें भी करते हैं. एंड इंडस्ट्री के ओवरऑल प्रोग्रेशन और रिफॉर्मेशन के लिए हमको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है उसको पेन डाउन भी करते हैं, सो दैट आने वाले साल में हम उसके ऊपर काम कर सकें. Finally, we are very fortunate to be with the man, Mr. Roshan Abbas, the president of EMA. Thank you, Mr. Abbas, for giving us time. Not at all. Pleasure. And congratulations for such a successful edition of Imagine. Thank you very much. It's fantastic. We've got over 300 to 400 people who've come from across the country. इतने सारे लोग यहाँ पर एक साथ देख के एक अच्छा भी लगता है, और दूसरा ये है कि अलग अलग टॉपिक्स पर बात हो सकती है, इंडस्ट्री के फ्यूचर के बारे में सोचा जा सकता है. So it's really, really wonderful. I'm so glad that you could also make it, so everybody gets to see how big this industry is. Absolutely. And रोशन जी, अगर हम बात करें कुछ हाइलाइट्स की, इस इवेंट के क्या हाइलाइट्स रहे हैं? बहुत ही इंसाइटफुल और कुछ डिस्कशंस रही हैं, थोड़ा सा आप उसके बारे में बताइए. तो देखिए, पहले तो हम लोग इनॉग्रेशन में INB सेक्रेटरी श्री अपूर्व चंद्रा जो हैं, वो हम लोग के साथ आए, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बिकॉज ऐसे लोग एक बॉडी हमको अडॉप्ट करे इस इंडस्ट्री को, वो इम्पोर्टेंट था. तो हम लोगों ने जिस तरीके से, अगर आप देखें, अब इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के नीचे इवेंट्स को कंसिडर कर रहे हैं. उन्होंने हमसे कहा कि एक इवेंट पॉलिसी अगर हम जो है वो प्रोड्यूस करें, वो बहुत अच्छा होगा. तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है. तो हम एक इवेंट पॉलिसी पे काम करने वाले हैं,
उसके बाद डायरेक्टर टूरिज्म आए थे उड़ीसा से मिस्टर जाधव, उनके साथ जो बात हुई तो उन्होंने बड़े क्लियरली हमको इंडिकेट करा कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं आगे चल के और किस तरीके से हम लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को अप्रोच कर सकते हैं। तो ये बात कल निकल के आई। इसके अलावा जो है हम लोग की स्पॉटलाइट अवार्ड्स में हम लोगों ने जयपुर रीजन हर तरफ के लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट से भी जो है वो सराहा, उनको रिकग्नाइज किया। और ये सारी चीज़ों से ना अगर आप देखें तो लोगों को पता लगता है कि किस तरीके से हमारी इंडस्ट्री और आगे बढ़ सकती है। तो दीज आर सम थिंग्स दैट हैपेंड। Apart from that, of course, we had a great interaction where we discussed about ROI of events. What is the future of the live business? क्योंकि ये business इतनी बढ़ रही है, तो उसमें आगे क्या होने वाला है हमने ये भी देखना था। तो these are some of the topics we've covered so far. आज हमारा एक बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ कि इंडस्ट्री के बड़े सवाल क्या हैं। तो टैलेंट एक बहुत बड़ा सवाल है, अगला टैलेंट कहाँ से आएगा। लोगों क्लाइंट्स का पेमेंट टाइम से नहीं आता, उसके बारे में बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ विस्तार से। लोगों को अपनी बिजनेस पे बात करनी थी कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा, किस तरीके से लोग इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। I think these are some of the things that we had to talk about. आपने प्रेजेंटेशन दिया था, ओपनिंग दी थी, that was really insightful. थोड़ा सा उसके बारे में प्लीज हमें एजुकेट कीजिए। तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था देखिए हमारी इंडस्ट्री में सबसे जरूरी चीज होती है कि लोग आज ऐसे पड़ाव पे आके रुके हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो मैंने उनको कुछ 10 चीजें बताई। एक तो ये था कि रियल इवेंट हमेशा ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन हाइब्रिड इवेंट, टेक्नोलॉजी वाले जो इवेंट हैं उसमें भी कोशिश हो रही है उनको रियल बनाने की। ऐसी टेलीविजन स्क्रीन आने वाली है जैसे बहुत जल्दी अगर आप टीवी की स्क्रीन पर कोई फ्रूट देखेंगे, कोई खाना देखेंगे तो उसकी सुगंध आपको टीवी से आ रही होगी। तो सोचिए किस तरीके की उपलब्धियां हो रही हैं कि आदमी वर्चुअल चीज को रियल बनाता जा रहा है। तो ये हमारी इंडस्ट्री को जानना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारे पास एक $500 बिलियन की वेडिंग इकोनॉमी हो जाएगी 2030 तक। तो 2030 में अगर ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है तो उस इंडस्ट्री को कहाँ से सपोर्ट मिलेगा, कहाँ से टैलेंट मिलेगा। और आज की जो यंगर पीढ़ी है ना, उनकी लाइक्स बहुत चेंज हो रही है। तो आज की जो दिग्गज है, आज की जो बड़ी एजेंसीज हैं, वो ये सोच रही हैं कि हम यहाँ पर ऐसे ही चलते रहेंगे तो वो गलत है, चीज़ें बदलती रहेंगी। दूसरी बात जो मैंने बोली वो ये थी कि आउटडोर वेन्यूज लोगों को ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, तो हमको आउटडोर वेन्यूज देखने चाहिए, हाइजीन के स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, होटल्स को भी अपने आप को डिजिटाइज करना पड़ेगा। और अंत में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी, वो ये थी कि बच्चन साहब ने एक कविता कही थी, अड़े रहो। तो उस पर मैंने कहा था कि सागर की लहरें जैसी हों, बस विश्वास पे अपने बढ़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। तो ये जो बात कही तो लोगों को दिल को बहुत छू गई, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में जूझना बहुत पड़ता है, 24 घंटे काम करना पड़ता है। मुझे लगता है कि न्यूज़ के बाद सबसे स्ट्रेसफुल इंडस्ट्री जो होती है वो इवेंट्स की होती है। तो ये चीज़ें साथ में हम लोग करते हैं। आई थिंक दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये मैसेज जो था मैं दे रहा था। और एक और चीज़ होती है कि इंडस्ट्री बॉडी से लोगों के एक्सपेक्टेशन बहुत होते हैं कि जल्दी जल्दी चीज़ें करिए। तो उसमें मैंने कोई कहानी बताई थी कि अगर आप देखें तो जब आप कभी जो होता है एक बांस का पेड़ लगाते हैं तो बांस का पेड़ 7 साल तक आप उसको कुछ नहीं निकलता, आप पानी डालते रहते हैं, क्योंकि वो असल में अपनी रूट्स बना रहा होता है। वो नीचे ज़मीन के जो होता है वो अपनी जड़ें ऐसे स्प्रेड कर रहा होता है कि जब वो उगता है 7-10 साल के बाद तो 1 साल में 70-80 फुट की ऊंचाई पकड़ लेता है। और लोगों को अचंभित होती है कि क्या है। ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं, इंडस्ट्री बॉडी ईमा ऐसी है। हम लोग इस पड़ाव पे हैं कि अब हमारी बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों को अगले 2 साल में हम छू जाएंगे। आपका जो विजन है वो अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। और फाइनली रोशन जी, आपको मुझे पता है थोड़ी जल्दी है, एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूँगा। अगर आपको एक मैसेज देना हो इंडस्ट्री को आज इस समय पे, तो वो क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से पूरी इवेंट इंडस्ट्री के? मैं इवेंट इंडस्ट्री से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर कुछ आप जिंदगी में पाना चाहते हैं तो सुनिए, जानिए कि और लोग क्या हैं। इस इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है, अनुभव है। उस अनुभव से सीखिए। हम लोग कभी कभार ईगो में फंस जाते हैं, अपने अहम में फंस जाते हैं। इन चीज़ों से आगे निकल के दूसरों को समझिए, दूसरों को रीच आउट करिए। ईमा एक ऐसी बॉडी है जो आप सबको जोड़ना चाहती है। इमेजिन एक ऐसी जगह है जो सबको जोड़ना चाहती है। और अगर आप इस तरीके से ही ईमा का मेंबर बनेंगे तो इंडस्ट्री और स्ट्रांग होगी, आप और स्ट्रांग होगे। और आखिर में तो वही कहूंगा कि विश्वास पे अपने बढ़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। Thank you so much, sir, for giving us time. Thank you so much. It was a pleasure talking to you. Thank you.